Then I think you are missing your school very badly. Children, you read about Aisha's favorite TV show. Do you remember what was Aisha's favorite TV show? Yes, The Little Monkey. So, children, today you are going to do and learn some exercises from your workbook. Your workbook is New Mulberry English Course Book. Workbook 1. Now, let's see the page number 7. It was given inside Aisha's house. Here, there is a comprehension that you have to read. Now, let us see what is about that comprehension. What is there in that comprehension? What is there given in the comprehension? Children, once again I am repeating, you read about Aisha's favorite TV show. Yes, The Little Monkey. Now, read about Jojo, the monkey who wants to draw all the animals in the zoo. Now, children, here there are the pictures given in the sentence. Now, here what you have to do, you have to name that picture. For an example, Jojo lives in a zoo. Are you able to see? Jojo lives in a zoo. Jojo is the name of little monkey. Yes, are you able to see this monkey? This is Jojo. He wants to paint all the animals in the... Can you tell me which picture is this? Yes, zoo. He takes a... Yes, can you tell me what is this? Do you know it? I think you love to do painting with this. Yes, this is a paintbrush. He takes a paintbrush. He takes some... Yeah, this is what? This is a color palette with so many colors, watercolors. Yes, he takes some color and palette. He paints a... Wow, what is this? Yes, this is a tiger. He paints a tiger. He paints a giraffe. What is this? Yes, giraffe. You know, children, that tiger and giraffe, these are wild animals. ये तो wild animals है, ये जंगल में रहते हैं. But if you want to see them, you can see them in the zoo. आप इन्हें कहाँ देख सकते हो? Zoo में देख सकते हो. Yes, so this is about the Jojo, the monkey. I know you all have given good answers. मुझे पता है आप सबको ये पिक्चर्स के आंसर्स अच्छे से पता है और आपने दिए भी होंगे मुझे. Very good, very well done. So children, these are all the naming words. Yes, you have studied what are naming words. आपने already क्लास में पढ़ लिया था. क्लास 1 के फर्स्ट चैप्टर में आपकी मैम ने आपको समझाया था. नाउ लेट्स सी. नाउ जोजो जस्ट टाइगर एंड जिराफ को ही नहीं और भी एनिमल्स पेंट किए थे. नाउ लेट्स सी उसने कौन से एनिमल्स को पेंट किया था. ही पेंट्स अ लायन. ही पेंट्स अ काउ. इज इट अ काउ? क्या वो काउ है? Is it a cow? Or, अच्छा, there is a cow in the zoo? Let me see. No, it's a wolf. He paints a lion. He paints a wolf.
He paints a giraffe. Wow! The zookeeper comes, he sees the painting of the animals. One animal is missing, he says. Jojo paints his own picture. Now, क्या हुआ जब जोजो ने ये पेंटिंग की उतने में zookeeper, do you know who is zookeeper? Zookeeper is a person जो zoo animals की देखभाल करता है. उसने जब देखा कि जोजो ने इतने सारे एनिमल्स की पेंटिंग की, देन ही सेड, उसने पूछा जोजो से, वन एनिमल इज मिसिंग, इसमें से तो एक एनिमल मिस है. देन व्हाट जोजो डिड, फिर जोजो ने क्या किया, जोजो ने अपनी पिक्चर बनाकर पेंट कर दी. वाओ, ही हैज एन आइडिया. यस, नाउ चिल्ड्रन, हियर आर सम क्वेश्चंस गिवन, बट you have to take the correct answer. यहाँ कुछ questions है. यहाँ पर हम पहले से read करेंगे and then इसमें जो right answer है उसको हम tick करेंगे. You all know the story, you understood the story well. तो अब आप answers भी दे पाओगे मुझे. Yes. Where does the Jojo live? Come on, tell me. Where does the Jojo live? जोजो कहाँ रहता था? Come on, tell me fast. In the forest, क्या वो जंगल में रहता था? In the zoo, क्या वो zoo में रहता था? Yes, the right answer is in the zoo. Very good. What things did he use to paint? जोजो ने क्या मटेरियल यूज किया पेंटिंग करने के लिए? Water colors and palette और crayons? The right answer is water palette. Very good. And colors. Color palette and colors. Very good. Which animal does he paint first? जोजो ने first कौन सा animal paint किया था? A tiger or zebra? Tiger किया था या zebra किया था? Come on, tell me. The right answer is a tiger. Very good. Now, D. Who says that one animal is missing? किसने बोला कि एक एनिमल इसमें मिस है? The zookeeper, जोजो द मंकी. zookeeper ने बोला था या जोजो मंकी ने बोला था? The right answer is the zookeeper. Children, in the box where the correct answer is there, put a tick mark. इस तरह से हम पेंसिल से right mark डालेंगे. Understood? So this is the comprehension of your first chapter, Aisha's the inside the house. Inside the house. Now children, it's time for grammar. Yes, you already learned what is naming word. Yes, naming words are the names given to animals, place, things and people. मुझे पता है आपको यहाँ आंसर आता है. नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं किसी एनिमल का नेम या किसी जगह का नेम, प्लेस का नेम, किसी सामान का नेम या फिर किसी भी पीपल यानी आप, मैं, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, इसको हम पीपल कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, हियर देयर आर सम नेमिंग वर्ड्स given on page number 9. Yes, naming words. Given below is a list of 10 words. Choose the naming word and write them in the box given below. Draw a picture of each naming word next to it. Children, here are some words. ये words आपको box में दिख रहे हैं. Yes, इनमें से आपको naming word sort out करना है. You know sorting? Yes, आपको अलग करना है इसमें जो भी नेमिंग वर्ड है. Then आप उस नेमिंग वर्ड को यहाँ बॉक्स में लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then जब आप ये वर्ड यहाँ पर लिखोगे
साइड में एक पिक्चर बॉक्स दिया गया है, there you have to draw the picture for that naming word. आपको उसी नेमिंग का वर्ड का यहाँ पर पिक्चर बनाना है. For an example, it was given pencil, pencil, pencil. Can you tell me, is it a naming word? क्या pencil naming word है? Yes, it is a name of thing. Pencil is a thing. आप यहाँ लिखोगे pencil and here you are going to draw the pencil like that. Eat. Eat is a naming word? No, it's an action word. Book? Yes. So please in second box may draw book and write down the naming word and draw the book. Pretty. Yes, pretty is not a naming word, so leave it. Fan. Yes, fan is a naming word. Write down the name here and draw the picture. Hat. Yes, hat is a naming word. Write down the name here and draw the picture of hat here. Sea. No, sea is not a naming word. Cup. Yes, cup is a naming word. So write down the name of the cup and draw the picture here. Learn. No, it's not a naming word. Think. No, it's not a naming word. I hope you all have understood very well about the naming words and how to write the naming word as with along and to draw the picture. Okay, children, don't forget to do that. Now, please turn over the page and take out page number 10. Yes, here there is a picture. Write a naming word starting with each of the following letters. Yes, you have to write a picture name starting with A. A से आपको एक नेमिंग वर्ड लिखना है. B से नेमिंग वर्ड लिखना है. C से एक नेमिंग वर्ड लिखना है. A for aeroplane you can write. B for book you can write. C for camel you can write. D for donkey you can write. E for elephant you can write. F for fan you can write. Any one naming word you have to write here starting with A, B, C, D, E, F. Yes, well done. Now children, you have studied that there are common nouns as well as exact noun. आपको मैम ने आपकी पढ़ाया था ना चैप्टर में कि कॉमन नाउन क्या होता है as well as the exact noun. So children, today you are going to do that. There is a paragraph where given, we have to read it and we have to find out the common names, nouns as well as the exact names. Common name are the names of the people, places and thing in general. A common name does not begin with a capital unless it is the first word of the sentence. Common name वो होता है children जो भी किसी भी एनिमल का या किसी प्लेस का किसी पर्सन का नेम होता है एंड वो कैपिटल में नहीं लिखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल गर्ल जो है कॉमन है क्योंकि गर्ल आयशा एक गर्ल थी, रानी भी एक गर्ल है, लेकिन जो गर्ल वर्ड है जी यार वो जी का जो है वो स्मॉल रहेगा और वो कॉमन रहेगा क्योंकि आयशा भी गर्ल है, रानी भी गर्ल है भाई, तो उनके नेम्स अलग है. उनका नेम जो है जैसे आयशा दैट इज द एग्जैक्ट नेम. ओके, सो हियर आर सम वर्ड्स. आपको आपके बुक में से वो वर्ड सॉर्ट आउट करना है एंड आपको फिल करना है. रिया एंड सानिया. यस, रिया एंड सानिया इज अ yes exact names. Friend is a common name. They live in Mumbai. Mumbai is a exact name. They go to beach called Juhu. Beach is a common. Juhu is a beach is the common. Juhu is exact. Every Sunday. Sunday is a
exact one. Things like they like to play at beach. They like to splash water at each other. They like to make castles with sand. Their dog Casper also play with them. So children, now let's sort it out. Fast, fast, fast. Yes, I know that. So, done? I hope you're sitting along with your pencil. Good. Well done. Next, what we are going to do? Yes, it's very easy. But before that, children, come on, write down fast. In common names, friends, beach, water, castle, sand, dog. Exact name, Ria, Sanya, Mumbai, Juhu Beach, Sunday, Casper. Very good. Now let's write. Now it's your home assignment. Here, children, you have to write about your best friend. Draw his picture, favorite fruit in the space given below. Then ask your friend to fill the drawing with color by thumb painting. यहाँ पर पिक्चर बनानी है. यहाँ पर आपको उस पिक्चर में और वो पिक्चर आपके फेवरेट फ्रेंड की फेवरेट फ्रूट की होनी चाहिए और अपने फ्रेंड से बोलिए कि इस पे थंब प्रिंटिंग दें. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज मीना, शी इज माई फ्रेंड, शी लाइक्स टू डांस. इवन आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक शी लाइक्स टू रन, शी लव्स टू रीड, शी लव्स टू राइट, शी लव्स टू डू पेंटिंग, शी लाइक्स टू प्ले. ओके, आप ऐसे यहाँ पर इस वाले में फिल करोगे. फॉर थंब पेंटिंग, पुट अ लिटिल वाटर ऑन द थंब, प्रेस जेंटली ऑन द पेपर टू मेक थंब इम्प्रेशन. आपको पता है थंब इम्प्रेशन क्या होता है? थंब को आप एक अपने वाटर पेंट में डिप करके फिर आप प्रेस करोगे तो वहां पर आपका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा. सो चिल्ड्रन, दीज आर द एक्सरसाइजेस विच यू हैव टू डू. Definitely, I am going to share the correct answers in the WhatsApp group. Till then, bye bye. Take care. Soon I will join you with a new chapter or grammar. Hope आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा होगा. Bye bye. Take care.